क्वेश्चन 14 में बी पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। ओके, दैट इज 7x minus 4 divided by 15 plus x minus 1 divided by 3. So if I multiply 5 over here, so denominator मेरे पास सेम हो जाएगा। So multiply and divide by 5. So 5 times 3 will be equal to 15 and 5x minus 5 हो जाएगा। That will be equal to 3x minus 1 divided by 5. This is divided by 10. So if you multiply 2 over here, so ये आपका ऊपर भी 2 आपने multiply करने, so 3 times 2 will be equal to 6x minus 2 divided by 5 times 2 is 10 minus 7 plus x divided by 10 हो जाएगा। सही है। So instead of writing 215, you will write 115 and you will write it like this: 7x minus 4 plus 5x minus 5. That's you look at, instead of writing 210, you write 110. 6x minus 2 minus 7. You will multiply this with this, and then minus times positive will be equal to negative x. You should be very careful in this type of question. Okay, ये silly mistakes आपसे नहीं होना चाहिए यहाँ पे। So 7 plus 5 will be equal to 12x. Minus 5 minus 4 will be equal to minus 9 divided by 15 हो जाएगा। That's will be equal to 6x minus x will be equal to positive 5x. Minus 2 minus 7 will be equal to minus 9 divided by 10 हो जाएगा। Now after this, अगर यहाँ पे if you have positive 6, तो फिर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकती, ओके, बिकॉज दिस इज द डिनोमिनेटर ऑफ 5x minus 9, नॉट 6। अगर ये आपका इस तरह होगा, then you can do the cross multiplication. So now in this case, you will do the cross multiplication like this: 10 times this whole thingy, 12x minus 9, 15 times 15x, sorry, this is 5x minus 9 हो जाएगी। Okay, so 10 times 12 will be equal to 120x minus 9 times 10 will be equal to 90. 15 times 5 will be equal to 75 minus 15 times 9 will be equal to, okay, so 120x minus 75x, ये positive 90 हो जाएगा, minus 135. So from this you will get 45x will be equal to, इससे क्या आएगा, इसको सॉल्व कर लो। 45 पॉजिटिव 45 आएगा, नेगेटिव 45 Negative. या नेगेटिव 45 आ जाएगा। So your x will be equal to -1 आ जाएगा। Okay, this will be your final answer. If you want to check this answer कि आपके आंसर सही है गलत, तो आपने x की वैल्यू यहाँ पे प्लग इन करनी है वैल्यूज को, और यहाँ पे भी करनी है। इफ दिस इज इक्वल टू दिस वैल्यू, तो फिर आपका इट मीन्स कि आपका आंसर सही है। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज CDE। इसमें कौन सा पार्ट कर लूँ मैं, या इजी है आपके लिए, आप कर लोगी? I think I can do them. Okay. Okay, question number 15. Read this question. In optics, the focal length f centimeters of a lens can be calculated using the formula 1 over f equals 1 over u plus 1 over v, where u centimeters and v centimeters are the object distance and the image distance from the center of the lens respectively. Part 1. Make v the subject of the formula 1 over f equals 1 over u plus 1 over v. Okay, so आपने you will need to make V as a subject. Okay, so solve this question, this part. Okay, इसमें V को subject बना लो। V equals fu over u minus f. Good. Okay, question number 16. ये part भी easy है, इसमें आपने values को plug in करने होंगे।
ओके, इन क्वेश्चन नंबर 16 में इसमें भी आपने एल को सब्जेक्ट बनाना है, तो ये भी इजी है। सेकंड पार्ट में आपने जस्ट वैल्यूज को प्लग इन करनी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 17, द अमाउंट ऑफ एनर्जी E joules stored in an object with a mass of m kilogram is given by the formula this। ओके, ये आप आगे इंशाल्लाह फिजिक्स में आप स्टडी करोगी। दिस इज द फार्मूला फॉर द टोटल एनर्जी। ओके, इन टोटल एनर्जी दिस पार्ट इज योर पोटेंशियल एनर्जी, में भी आपने साइंस में पढ़े होंगे। सो दिस इज द potential energy mgh, okay, which depend on the height। Okay, like if you pick a book from this floor, okay, if you pick this book from this floor, तो आपको कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, दैट इज इक्वल टू एम जी एच। ओके, एम इज द मास ऑफ दिस बुक, जी इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल which is equal to 9.8 and h is this height। okay, so इस बुक के लिए आपको कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, लाइक फ्रॉम पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक कैरी करने के लिए इसको कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, दैट इज इक्वल टू एम जी एच। लाइक यू कैन फाइंड दैट एनर्जी बाय यूजिंग दिस फार्मूला। ओके, आपने सिंपल मास फाइंड करना है उस बुक का, जी की वैल्यू आपके पास स्टैंडर्ड है दैट इज 9.8, और ये हाइट कितनी हाइट तक आपने इसको पिक करनी है, तो वो आपने फाइंड करनी है थ्रू मीटर रोड। ओके, तो आपको लाइक देन यू विल नीड दैट टाइप ऑफ एनर्जी, लाइक इतनी एनर्जी आपको रिक्वायर्ड होगी फिर। ओके, okay, and this is the kinetic energy। okay, 1 by 2 mv square, this is the kinetic energy। okay, like if you are driving a car, तो like तो कार के लिए कार को फ्रॉम पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक जाने के लिए कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, that is you can find that by using this formula 1 divided by 2 mv square, like m is the mass of that car। okay, कि इस कार का मास कितना है। ओके, इसका मास कितना है, एंड v इज द वेलोसिटी ऑफ दिस कार, कि आप कौन सी वेलोसिटी के थ्रू इस कार को फ्रॉम पॉइंट 1 टू पॉइंट 2 कैरी करना है। तो दैट इज इक्वल टू वो वेलोसिटी आपने इस फार्मूला में प्लग इन करनी है, वो वैल्यूज। तो वो आपको ये फार्मूला जो है ये आपको एनर्जी दे देगी कि इस कार को इतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी इफ दिस वन वांट टू मूव फ्रॉम पॉइंट 1 टू पॉइंट 2। ओके, तो जब भी सब्जेक्ट मोशन में होगा, लाइक यहाँ तक आपने बुक को पिक कर लिए एंड दिस इज एट रेस्ट पोजीशन, ये रेस्ट पोजीशन में है, तो रेस्ट पोजीशन के लिए आपने ये फार्मूला अप्लाई करना है, पोटेंशियल एनर्जी। ओके, और मोशन के लिए अगर आपने एनर्जी वो की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आपने फिर ये फार्मूला अप्लाई करना है, दैट इज काइनेटिक एनर्जी 1 डिवाइड बाई 2 एम वी स्क्वायर। ओके, जब भी कोई सब्जेक्ट मोशन में होगा और उसके लिए आपने एनर्जी फाइंड करनी है, लाइक इफ यू वांट टू थ्रो दिस बॉल, ओके, फ्रॉम 1 टू 2 पॉइंट सेकंड पॉइंट, तो इसकी स्पीड आपने फाइंड करके कि कितने स्पीड के साथ जाएगा और इस बॉल का मास कितना है, तो फिर आपको वो दोनों वैल्यूज आपने इस फार्मूला में प्लग इन करनी है। वो तो ये फार्मूला आपको बता देगा कि आपको इतनी एनर्जी इस बॉल को देनी देनी चाहिए होगी, सो दैट दिस बॉल विल मूव फ्रॉम पॉइंट 1 टू पॉइंट 2 विद दिस वेलोसिटी, जो आपकी रिक्वायर्ड वेलोसिटी होगी। ओके, सो जब भी मोशन में आपको एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, तो आपने ये फार्मूला अप्लाई करना 1 डिवाइड बाई 2 एम वी स्क्वायर। रेस्ट पोजिशन के लिए आपने ये फार्मूला अप्लाई करना है एम जी एच। ओके, where h is the height of the object above the ground, v is the velocity of the object, and g is taken to be 10। okay, actually the value of g is equal to 9.8, but यहाँ पे इन्होंने 10 आपको दे दिए। okay, so you will take this value। okay, given that velocity is greater than or equal to 0, make v the subject of the formula। तो subject आपने उसी तरह फाइंड करने, तो इजी हो गया। सब्जेक्ट इसका क्या हो जाएगा, ई माइनस एम जी एच हो जाएगा, टाइम्स 2 हो जाएगा, डिवाइड बाय एम हो जाएगा। ओके, दैट्स विल बी इक्वल टू वी स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट ले लो, तो दैट्स विल बी इक्वल टू वी। और यू कैन राइट इट लाइक दिस इन सिंप्लीफाइड फॉर्म, यू कैन राइट इट लाइक दिस 2 ई डिवाइड बाय एम माइनस
2gh square root. Okay. Hence, find the velocity of the object with a mass of itna if it is 2 meter above the ground and has 100 joule of energy. तो E की जगह आपने ये वैल्यू पुट करनी है, M की जगह आपने 0.5 पुट करनी है, इसमें भी और इसमें भी. हाइट के लिए आपने 2 पुट करने हैं, तो हाइट आपका 2 हो जाएगा. G वैल्यू आपको 10 गिवन है. So from this formula you can easily find the value of V. Okay. और आप ये सारे वैल्यूज इसमें प्लग इन कर लो तो आपके पास V की फाइनल वैल्यू आ जाएगी. ओके, इजी है, इतना मुश्किल नहीं है इसमें. बस यू शुड बी वेरी केयरफुल इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, क्योंकि एक सिली मिस्टेक जो है वो आपको लाइक पूरा क्वेश्चन आपका वो गलत हो जाएगा. सो यू शुड बी वेरी केयरफुल इन ऑल दी स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, इनका आपने काफ़ी केयर करना है. ओके, सो दिस इज द एंड ऑफ दिस chapter.